Assalamu alaikum everyone. We'll continue from our last class. That was a basic costing concepts where we discuss about the fixed cost, variable cost, total cost, direct cost, indirect cost. Basic concept discuss kar liya tha, and I've also taught you how to calculate the profit using a simple equation that is total revenue minus total cost. How to calculate total cost at different output level. We have done this thing as well. दो examples हम कर चुके हैं. एक तीसरी एग्जाम्पल मैंने आपको घर पे करने के लिए दी थी, आज उसको फिनिश करेंगे एंड वील मूव टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट? We'll move towards the concept of contribution as well. So let's start with the work. If you all can listen to me, just raise your hand or use the thumbs up, right? If you all can listen to me, just raise your hands, guys. Just raise your hands if you all can listen to me. Yes. Yes, everyone, if you can listen to me, just raise your hands. The agenda of today's class is the previous class question, which was given as an example, and we'll move towards the concept of contribution as well. Right, now we have more than 40 participants, so let's begin with the work. Let's begin with the work, guys. Let's begin with the work. This was the example given to you as a homework. Hopefully आपने इसको solve किया होगा. Guys, आज के lecture we'll try to figure this out और हम इसको YouTube पे launch या YouTube पे load करने की कोशिश करेंगे, guys. We're having some trouble loading the videos to the YouTube, but we'll try our level best. A business produces 120,000 units per annum, and at that level of production, the following cost data is available. तो हमें 120,000 units per unit cost given है, and direct material is $10 per unit, which is a variable cost. Direct labor is also a variable cost, and variable overheads are also variable cost. That means total variable cost की अगर हम बात करें, so that is $20. Fixed overheads normally, usually we are given with on total basis, but right now we are given on per unit basis. तो हम per unit को multiply कर देंगे output level से 5 into 120,000. So our total fixed cost is 600,000. Now remember this thing, guys. This is our total fixed cost. And as the output level will increase, the total fixed cost will not increase. Output level अगर decrease होगा, तब भी total fixed cost में decrease arise नहीं होगा. Because ये जो $5 per unit दिया हुआ है, वो किस activity पर given है? That is given at 120,000 units. तो हमने इस basis पर total fixed cost calculate कर ली कि total fixed cost is 600,000. Requirement A, if the selling price is per unit is $45, calculate the annual profit. So we need to calculate the annual profit. So what is our total revenue? 45 multiplied by 120,000 units. That is 5.4 million. Selling price is 45 multiplied by 120,000 units. So our sales revenue is 5,400,000, or we can say 5.4 million, or we can say 5,400,000. Less total cost. Total cost की heading डाल सकते हैं, उसके नीचे इसका breakup दिखा सकते हैं. Variable cost, total variable cost. Total variable cost. Per unit variable cost was 20 multiplied by 120,000. That is 2.4 million. That makes 2,400,000.
Then we have also have a total fixed cost of 600,000. Total cost comes to 3 million. So annual profit is 2.4 million, or we can say 2,400,000. This is our annual profit, or profit per annum, we can also say. Next, the next requirement, guys. Calculate the output level at which the total revenue is equal to total cost. एग्जामिनर पूछ रहा है कैसा आउटपुट लेवल कैलकुलेट करो जिसपे हमारा टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट के. दैट मींस ही इज एक्चुअली आस्किंग अस टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी. ही इज एक्चुअली want us to calculate the break even level of activity, right guys? तो अगर ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, राइट? तो हम इसको एक इक्वेशन मेथड के जरिए कर सकते हैं, राइट? एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन मेथड? वी नो टोटल रेवेन्यू को इक्वेट करना है टोटल कॉस्ट के. टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट. There are few other methods as well जिसके जरिए हम इसको solve कर सकते हैं, and that is the contribution method. But because we have not yet studied the contribution method, so we will be using this particular equation, and that is total revenue minus total revenue is equals to total cost. And how do we calculate total revenue? Selling price into output level equals to total cost is variable cost per unit into output level plus total fixed cost. तो अब आउटपुट लेवल ही तो फाइंड आउट करना है जिसपे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो, इक्वल टू जीरो. इसका मतलब लेट द आउटपुट लेवल बी व्हाट, लेट द आउटपुट लेवल बी एक्स, लेट द आउटपुट लेवल बी एक्स. लेवल बी एक्स. सो लेट्स स्टार्ट. सेलिंग प्राइस हमें पता है 45. Selling price is 45 into number of units is X equals to. Now we have variable cost per unit, which is $20 into number of units X plus fixed cost. And what is our total fixed cost? It's 600,000, guys. So 45x minus 20x, that makes 25x equals to 600,000. So 600,000 divided by 25, that makes 24,000 units. So at 24,000 units, we can achieve that level of activity at which profit and loss is equal to what? Zero, where the total revenue is equal to total cost. So 24,000 units, at 24,000 units, our total revenue will be equal to total cost. कैसे किया हमने इसको इक्वेट कर दिया टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, आउटपुट लेवल को एक्स अज्यूम करके. नेक्स्ट, see, the sales manager informed that if selling price is reduced to 38 per unit, the demand will increase to 150,000 units. Calculate profit loss if there is change in selling price and advise the directors whether the change should be accepted. So now let's move on with the new working. What is our new selling price? The new selling price is going to be 38. What is our new output level? 150,000 units, right? Variable cost per unit would remain same, fixed cost in total will remain same. So let's calculate the profit with the new demand and with the new selling price. Let's do it, guys.
What is going to be our new sales revenue? So the selling price is now 38. Selling price is 38 and the demand have increased to 150,000 units. The total revenue is now 5.7 million. That is 5,700,000. Variable cost per unit would remain same, but the output level will be changed. Now we have 150,000 units. So 20 multiplied by 150,000, the total variable cost is 3 million. And the fixed cost is 600,000. The total cost is 3,600,000. 5.7 million minus 3.6 million, that makes 2.1 million. 2,100,000 is going to be our total profit. पहले हमारा annual profit कितना था? 2,400,000, and now our annual profit is 2,100,000. So should the change be accepted? However, the demand is increasing, but the profit is decreasing by 300,000. Therefore, although the demand is increasing, but because of decrease in profit, the change should not be accepted. Next, a new supplier entered the market who's selling the finished product for $25 per unit. If we purchase the product from an outside supplier, the fixed cost will decrease by 25%. Calculate the output level at which the total cost of production is equal to total cost of purchasing from outside supplier. तो पहले हम outside supplier को देख लेते हैं और हम अपनी production को भी देख लेते हैं. Production variable cost is 20. Variable cost is $20. Fixed cost, variable cost per unit is $20 per unit. Total fixed cost is 600,000. Purchase. अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, परचेस करेंगे तो क्या होगा? तो सर हमें परचेस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. And purchase cost is to be treated as our variable cost because एक यूनिट 25 का लेंगे, 2 लेंगे तो 50, 10 लेंगे तो 250 and so on. That means purchase cost is what? Purchase cost is our variable cost. That is $25. और फिक्स कॉस्ट बोला हुआ है 25% से कम होगी, राइट? तो राइट नाउ अगर 600,000 है तो 25% से कम होकर 75% पे चली जाएगी. It's now going to be 450,000. %25 से कम की तो रही कितनी? 75% बच गई. हमने डायरेक्टली इसका 75% निकाल दिया. रादर देन कि मैं 600,000 का 25% निकाल कर 600,000 में से माइनस करूंगा, मैं डायरेक्टली 75% कैलकुलेट कर सकता हूं. लेकिन जिनके दिमाग कमजोर है, मेक श्योर कि आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लो गाइस.
Now, what is examiner asking us? Examiner ने हमसे पूछा क्या है? Examiner ने पूछा है calculate the output level at which total cost of production is equal to total cost of purchasing from outside supplier. So again, we need to equate. How do we equate? Total cost of production equals to total cost of purchase. So what is total cost of production? Variable cost per unit is 20. Total cost कैसे आती है? Variable cost per unit into output level plus fixed cost. Plus output level plus total fixed cost. So 20 is variable cost for production multiplied by output level is X. Let the output level be what, guys? X. Plus total fixed cost is 600,000. Equals to total cost of purchase. What is variable cost? That is 25 into output level. What is output level? Let the output level be what? Output level हमारा X है plus total fixed cost. And purchase के अंदर हमारी fixed cost कितनी हो गई है? 450,000 plus 450,000. Equate कर लेंगे guys. 450 वहां मूव हो जाएगा. 600,000 minus 450,000, that is 150,000 equals to 20 वहां चला जाएगा. 25x minus 20x is 5x. तो 150,000 divided by 5. तो 30,000 यूनिट्स पर 30,000 यूनिट्स हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर 30,000 यूनिट्स हम किसी आउटसाइड सप्लायर से बाहर से परचेज कर लें, the total cost in both the option would be what? Same. That means at 30,000 units, either I am producing myself or purchasing from an outside supplier. My total cost would be what? Same. Clear, guys? So these were the requirements, these were the data. ये आपको मैंने questions घर पे solve करने के लिए दिए थे, right? And before we commence, we will be now moving towards the new concept, and this is going to be a major concept. It's called contribution. So we will be putting a heading called concept of contribution. Concept of contribution. Now it's a very important concept, और AS में हमारी costing में सबसे important अगर कोई concept है marginal costing में, that is called the concept of contribution. Now guys, what does contribution actually means? Contribution का मतलब क्या है? To understand the concept of contribution, we need to have a look at our selling price. हम सबसे पहले selling price को देखेंगे. Selling price. Selling price is the price at which we are actually selling a single unit to our customer. Selling price वो price होती है जिसके ऊपर हम अपना revenue generate करते हैं, अपना output level sell out करते हैं. किसी भी product की selling price के दो important functions हैं. And what are these two functions of selling price? Selling price should be sufficient enough to cover the cost, and it should be sufficient enough to contribute
to contribute something towards what? Profit. कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सेटअप करता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा हम इस बेसिस पर सेटअप करते हैं कि वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करे. Number one, the selling price should be sufficient enough to cover the entire cost, and the selling price should be sufficient enough to contribute something towards the profit. Right, guys? अगर मैं एक commodity से, for example, $8 की purchase करता हूं, तो in normal circumstances, normally, usually, I will never set up a selling price which is lower than the $8. हमेशा मैं कितनी सेलिंग प्राइस सेटअप करूंगा? इन ऑल यूजुअल सर्कमस्टांसेस आई विल ट्राई टू सेट अप अ सेलिंग प्राइस व्हिच इज हायर देन $8, because a selling price which is higher than $8, maybe 8.5, maybe 9, maybe 10, a selling price which is higher than the cost price of $8 would satisfy two functions. It will cover the cost for me, and it will also contribute something towards my selling price. सपोज मैंने सेलिंग प्राइस को $10 सेटअप किया, राइट? तो मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ $10 इज एक्चुअली सैटिस्फाइंग द टू कैरेक्टरिस्टिक्स. It is covering my cost price of $8, and it is also contribute something towards what? My profit. It is also contribute something towards my profit. Now, अगर मैं cost को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि हमने समझा है, सीखा है कि भाई कॉस्ट को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई, कैटेगराइज कर सकते हैं अभी तक, एंड दैट इज कि हमारे पास कॉस्ट में एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट का है और एक फिक्स्ड कॉस्ट का है. राइट गाइस? तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेलिंग प्राइस, इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए. सेलिंग प्राइस का पहला फंक्शन क्या है कि इट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन इट शुड सफिशिएंट इनफ टू कवर माय फिक्स्ड कॉस्ट, एंड देन इट शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स माय प्रॉफिट एज वेल. इसका मतलब सेलिंग प्राइस का पहला फंक्शन क्या है? सेलिंग प्राइस का पहला फंक्शन है कि उसने वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप करना है. उसने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है, और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद जो हमें सरप्लस मिलेगा, वो सरप्लस किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा? फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा. राइट? दैट मींस सेलिंग प्राइस ने अगर वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर दिया, तो उस वेरिएबल कॉस्ट कवर अप करने के बाद सेलिंग प्राइस के अंदर जितना सरप्लस है, दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स व्हाट? प्रॉफिट, टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट. राइट? That means सबसे पहला function selling price का ये है कि it need to cover the variable cost, and once the variable cost is covered, the surplus will contribute towards covering of fixed cost, and once the fixed cost is covered, the surplus will contribute towards what? Profit. Right? That means selling price का पहला function क्या है कि it needs to cover the variable cost, और जो सरप्लस होगा वो पहले किसको कवर अप करेगा? फिक्स कॉस्ट को. राइट? इट विल कवर द फिक्स कॉस्ट, एंड जब फिक्स कॉस्ट हमारी कवर अप हो जाएगी, द सरप्लस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स व्हाट? प्रॉफिट. तो गाइस, जब हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो to be simple speaking, in simple language we can say कि selling price के दो important functions हैं. It need to cover the cost as well as the profit. लेकिन अगर हम cost को categorize कर लें, खोल दें, breakup बना दें cost का, तो we know this thing कि cost can be categorized as a variable cost and fixed cost. तो when we say कि यार अगर selling price में से हम variable cost के element को eliminate करें, so the surplus we have means that this is something which is contributing towards our fixed cost. उस surplus को पहले किस चीज को cover up करना है? The second element of the cost. And what is the second element of the cost? That is the fixed cost. And once we have the bucket amount of surplus, हमारे पास इतना surplus जमा हो गया है कि उसने हमारी सारी fixed cost cover up कर दी.
तो जो एडिशनल सरप्लस होगा वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा? वो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा गाइस। इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस का पहला फंक्शन क्या है कि इट नीड्स टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कवर करके जो भी सरप्लस हमें मिल रहा है वो फिक्स कॉस्ट कवर करने जाएगा। और अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल ये बकेट है, इसमें मुझे हर सरप्लस मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है सरप्लस, एकदम मेरे पास इतना सरप्लस जमा हो जाएगा कि आई एम एबल टू कवर माय फिक्स कॉस्ट। एंड वंस आई एम एबल टू कवर माय फिक्स कॉस्ट, जो एडिशनल सरप्लस है वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा? वो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा गाइस। Got my point? तो व्हाट डज कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मींस? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है फिक्स्ड एलिमेंट को कवर करने के लिए, आफ्टर इट हैव ऑलरेडी कवर्ड द वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस ने जब फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर दिया, तो हाउ मच आवर सेलिंग प्राइस इज सपोर्टिंग, हेल्पिंग us in covering the fixed element of the cost after it have covered the variable cost. Suppose guys, example के तौर पर suppose kids, well, I look horrible in the front camera, but that's okay. Anything for you people. Suppose guys, we have, I'm actually a merchant, I'm actually a businessman who's dealing in these markers, right? मैं इस markers में deal कर रहा हूँ। मैं इस मार्कर को या इस पेन को परचेज करता हूं एट अ सेलिंग एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ $8। एक मार्कर परचेज करूंगा $8 का, दो मार्कर परचेज करूंगा 16, तीन परचेज करूंगा 24, एंड देन उसके बाद 10 परचेज करूंगा 80, 100 परचेज करूंगा 800, 1000 परचेज करूंगा 8000, 10,000 परचेज करूंगा 80,000, 100,000 परचेज करूंगा 800,000 एंड सो ऑन। That means on every additional product purchase, I have to pay $8 की cost. That means this is my variable cost, right? मैंने एक business startup किया गुलशन और नाज़िमाबाद के बीच में, गुलशन और नाज़िमाबाद के बीच में एक फेडरल बी एरिया के अंदर मैंने अपनी दुकान ओपन की। जो फेडरल बी एरिया के बच्चे हैं वो खुश हो गए। ओके सर, फेडरल बी एरिया में मैंने अपनी दुकान ओपन की और मैंने डिसाइड किया कि इस मार्कर को मैं होलसेल मार्केट सदर से परचेज करूंगा $8 का और अपनी दुकान में आकर बेच दूंगा $10 में। इसका मतलब मैं खरीद कितने में रहा हूँ? $8 में, बेचूंगा कितने में? $10 में। तो सर इसका मतलब आपका प्रॉफिट $2, बट दिस इज नॉट माई प्रॉफिट बिकॉज अभी तक $8 की मैंने क्या कवर अप की है? वेरिएबल कॉस्ट। जिस दुकान में बैठ के मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस दुकान का मुझे रेंट भी पे करना है। उस दुकान में मैं किसी सेल्स मैनेजर या से फॉर एग्जांपल किसी सेल्स असिस्टेंट को, किसी छोटू को हायर करूंगा अपनी हेल्प के लिए, मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। जो मैंने एस्टिमेट किया कि इन सारी कॉस्ट, इन सारी अमाउंट की, इन सारी की सारी जो फिक्स कॉस्ट है विच आई नीड टू पे इंक्लूडिंग रेंट, सैलरी एंड अदर फिक्स्ड एलिमेंट कॉस्ट, इट सम अप्स टू बी 50,000 पर मंथ। कितनी है मेरी फिक्स कॉस्ट? इट्स 50,000। इसका मतलब जब मैं एक $10 का सिंगल यूनिट सेल आउट करूंगा तो मुझे पता है कि इसकी परचेज प्राइस कितनी है। इसकी परचेज प्राइस $8 है। तो $2 इज नॉट गोइंग इनटू माय पॉकेट, ये मेरी पॉकेट में नहीं जा रहा। ये $2 इज नॉट माय प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मैं अपनी पॉकेट में ले जा सकता हूँ। दिस $2 इज व्हाट? दिस इज नॉट गोइंग इनटू माय पॉकेट, दिस इज एक्चुअली फिलिंग अप अ बकेट। और वो बकेट पहले किस चीज को कवर अप करेगा? 50,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर अप करेगा। हर यूनिट जो मैं सेल आउट करूंगा वो मुझे कंट्रीब्यूट देगा, मुझे कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, पुश करेगा। कितना डॉलर पुश कर रहा है? $2 पुश कर रहा है। किस चीज के लिए? फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। अब मेरी फिक्स कॉस्ट 50,000 है, एक सिंगल यूनिट में बेचूंगा 50 में से $2 की कॉस्ट कवर अप हो गई, राइट? दो यूनिट्स बेचूंगा, मेरी 50,000 में से $4 की कॉस्ट कवर अप हो गई। 10 यूनिट्स बेचूंगा, मुझे $20 का सपोर्ट मिलेगा। 50,000 में से $20 कवर अप हो गया। सर 100 यूनिट्स बेचेंगे, आपको 200 का सपोर्ट मिलेगा। 50,000 में से 200 की कॉस्ट कवर अप हो गई। सर 1000 यूनिट्स बेचोगे, यू विल गेट अ सपोर्ट ऑफ 22,000। दैट मींस 50,000 में से 2000 की कॉस्ट कवर अप हो गई। सर 10,000 यूनिट्स सेल आउट करोगे
तो 10,000 यूनिट सेल आउट करने पे यू आर गेटिंग अ सपोर्ट ऑफ हाउ मच 20,000, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000. 20,000 units sell out karoge, you are getting a support of how much 40,000, but fixed cost is how much 50,000. So sir, if you sell 25,000 units, you will be able to generate sufficient amount of help. इतनी हेल्प आपको मिल जाएगी, इतना चंदा जमा हो जाएगा आपके पास, जिसको आप क्या कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट को कवर अप करने में हेल्प कर सकते हो. क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी 50,000 है और हमें हर यूनिट बेचकर इतना बकेट जमा करना है, इतना चंदा जमा करना है कि हम फिक्स कॉस्ट को 50,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर अप कर सकें. तो इफ a single product is giving me a support push or contributing $2 towards covering of my fixed cost, so I need to sell at least 25,000 units to generate 50,000 ka total support, because this 50,000 support is actually covering my fixed cost. And once I'm able to cover the entire fixed cost, तो जो भी एडिशनल यूनिट में सेल आउट करूंगा वो $2 अब मेरी पॉकेट में जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू मी, बिकॉज मैं कॉस्ट सारी कवर अप कर चुका हूं. तो वट एवर एडिशनल यूनिट्स आई एम सेलिंग above 25,000 units would be supporting towards my profit. Got it everyone? Contribution का मतलब समझ में आ गया कि what does contribution actually means. Contribution का मतलब होता है how much your selling price is contributing, supporting or helping in covering the fixed element of the cost after it have already covered the variable component. वेरिएबल कंपोनेंट कवर अप करने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस हमें कितना सपोर्ट दे रही है, कितना हेल्प कर रही है फिक्स्ड एलिमेंट को कवर अप करने के लिए. एंड वंस द फिक्स्ड एलिमेंट इज कवर्ड, ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स व्हाट? प्रॉफिट. गॉट इट गाइस? गॉट इट? यस सर. सर कैन बी यूज अ सिंपल? बेटा जी हाँ सर. अम्मी कह रही हैं कि आप बहुत Who is this Ali Bhavani? ये फ्री के भी कुछ बच्चे आ गए हैं बेटा पढ़ने के लिए. Start with the work, guys. All right, let's start with the work. Let's start with the work, everyone. Let's move on. The problem with the broadcasting is this कि guys, आप लोग जो link है वो एरे गेरे अपने नट्टू गेरों को भी ट्रांसफर कर देते हैं. Please make sure कि this is only for the students who are actually my students. यहाँ वहाँ का एरा गेरा जो भी बंदा है अगर वो आया हुआ है तो please उसको kick out करना है हमें, ठीक है? And don't provide, this is not a public access. Public washroom नहीं है कि कोई भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? To make sure that you follow the trends and you don't transfer this link to everyone, because we cannot keep a check. But if I find someone who is not known to me, who is actually, it's not a public forum, right?
तो काइंडली उसको भी हमें बताना पड़ेगा, right? There was a kid who was actually using faulty language regarding this thing, so I need के उसकी मम्मी या पापा से पूछना पड़ेगा कि उसका क्या हालात है, right? चलो, let's start with the work, guys. Without a delay, let's move on. Let's move on towards the concept of contribution. So as we discussed earlier, okay, what is contribution? Contribution means how much our selling price is contributing, supporting, or helping towards covering a fixed cost. Suppose if I'm selling a marker for $10, this is my selling price. My selling price is what? $10. My selling price is $10. Variable cost is $8. And fixed cost is 50,000. तो कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ $8 में से वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप करने के बाद हाउ मच सरप्लस आर वी हैविंग? वी आर हैविंग अ सरप्लस ऑफ हाउ मच? $2. वी आर हैविंग अ सरप्लस ऑफ $2, and this surplus is called contribution. This is called what? Contribution. And this contribution will support towards what? Towards covering a fixed cost. कितनी fixed cost है? 50,000 की. अगर हर एक single unit $2 का support provide कर रहा है, तो 50,000 की fixed cost को cover up करने के लिए I need to sell 25,000 units. I need to sell how much? Sir, we are having a support of $2, and if we have a fixed cost of 50,000, that means we need to sell 25,000 units to cover our entire fixed cost. Once we are able to sell 25,000 units, each and additional unit sold will contribute towards what? Towards profit. Once we are able to cover the entire fixed cost, हर एक single unit किसकी तरफ contribute करेगा? Profit की तरफ. But sir, if the business is unable to sell 25,000 units, अगर हमने सिर्फ 20,000 units sell out किए, तो इसका मतलब the contribution we are getting from 20,000 units would be 20,000 units into 2, that is 40,000, and the fixed cost is 50,000. That means the business is not able to cover 10,000 की fixed cost. That means we are operating at loss. If we are able to sell 30,000 units, kids, so 30,000 into 2, that makes 60,000, जिसमें से fixed cost कितनी है? 50,000. Therefore, जो 10,000 है, वो हमारा क्या होगा? Profit होगा. इसका मतलब any activity below 25,000 units will not be able to generate sufficient amount of contribution to cover our entire fixed cost. Therefore, we must be operating at loss. Any activity above 25,000 units will generate sufficient amount of contribution to cover the fixed cost as well as to contribute towards what? Profit. Right, guys? When the output level is less than 25,000 units, there is a loss. Output level equal to 25,000, profit and loss is 0, and that's called the break-even point. No profit, no loss means break-even. And output level greater than 25,000 means we have sufficient contribution to cover fixed costs and also contribute something towards our profit. Clear, guys? So what is the definition of contribution? How we can define the term contribution, guys? Contribution means how much the selling price is contributing,
towards covering of fixed cost, towards covering of fixed cost after it have already covered, after it have already covered the variable cost, after it have already covered the variable cost, after it have already covered the variable cost. So how do we calculate contribution? Contribution equals to contribution margin, or we can also say contribution per unit. It's contribution margin, and we can also say contribution per unit. It's contribution margin or contribution per unit. So how do we calculate contribution? This is selling price minus variable cost per unit. It's selling price minus variable cost per unit. Right, guys? Next slide में लिखिएगा. If the contribution is sufficient enough to cover the entire fixed cost, if the contribution is sufficient enough to cover the entire fixed cost, if the contribution is sufficient enough to cover the entire fixed cost, to cover the entire fixed cost, to cover the entire fixed cost, break-even level of activity arises. Break-even level of activity arises. Clear, guys? Any confusion, any problem now? Now we will be discussing some of the basic concepts कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, guys. और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पुरानी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो लेट्स पुट एन हेडिंग ऑफ बेसिक कैलकुलेशंस. Basic calculations. Number one, total revenue. Number one, total revenue. How do we calculate total revenue? Total revenue is quantity sold into price, that is selling price. Quantity sold multiplied by selling price. How do we calculate total cost? Total cost is total variable cost plus total fixed cost. Total variable cost plus total fixed cost. And we can write the same equation in any other in the other manner as well, and that is variable cost per unit into output level. Variable cost per unit into output level plus total fixed cost. Plus total fixed cost. All right, guys. Next is contribution per unit. Contribution per
unit, and that is selling price minus variable cost per unit. Total contribution. Total contribution is total revenue minus total variable cost. Total revenue minus total variable cost. Or contribution per unit into output level. Or contribution per unit into output level. Next, break even in units. तो break even in units के लिए we take total fixed cost. Fixed cost हमें total में लेनी है और contribution we will be using per unit basis पर. Total fixed cost divided by contribution per unit. Next is break even in value. ब्रेक इवन इन वैल्यू का क्या मतलब होता है? ब्रेक इवन वैल्यू का मतलब कि जब ब्रेक इवन अराइज हुआ, when the break even level of activity arises, तो हमारी total cost, total revenue क्या है? That's called break even in value or break even in dollars. That is break even in units multiplied by selling price. हमें टेक्निकली ब्रेक इवन इन यूनिट्स के ऊपर अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करना होता है. तो break even in units multiplied by selling price will give us break even in value or break even in dollars. कि जब break even level of activity arise हुआ, उस वक्त हमारा revenue and cost क्या था? सेम था. तो हम revenue calculate कर लेते हैं, तो it's called break even in dollars. Or there is one more method, that is total fixed cost. Total fixed cost. थोड़ा गैप देके लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन से. Total fixed cost divided by contribution to sales ratio. जैसे gross profit ratio होता है, that express the relationship of gross profit with sales revenue. Over here we have a relationship of contribution and sales. Total fixed cost divided by contribution to sales ratio. What is contribution to sales ratio? It's also called CS ratio. The numbers next is contribution to sales ratio. And how do we calculate contribution to sales ratio? It's also called CS ratio. It's also called profit volume ratio. Full form use कर लेंगे ताकि आप लोग भूले नहीं. It's CS ratio also means profit volume ratio. And what does contribution to sales ratio or profit volume ratio means? What does this mean? It expresses the relationship. It expresses the relationship of contribution with selling price. It expresses the relationship of contribution with selling price with selling price or we can say
It is the contribution expressed as a percentage of sales revenue. It means the contribution expressed as a percentage of sales revenue. It means the contribution expressed as a percentage of sales revenue. As a percentage of sales revenue. Or we can say, or contribution earned on every $1 of sales. कि हर $1 की sales पर $1 की sales पर how much contribution we are earning. For every $1 of sales. तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100. डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100. अगर कंट्रीब्यूशन आपने पर यूनिट लिया है तो सेलिंग प्राइस भी कितने में लेंगे? पर यूनिट में लेंगे. लेकिन अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो आपको सेल्स भी टोटल में लेनी होंगी. दैट मींस टोटल रेवेन्यू. एंड हम जितने भी यूनिट सेल आउट करें, हमारा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा अनलेस देयर इज चेंज इन सेलिंग प्राइस और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. राइट गाइस? तो यहां पे मैं इस चीज को मेंशन भी कर देता हूं. दैट इज contribution to sales ratio will remain constant at all activity level. Contribution to sales ratio will remain constant at all activity level. At all activity level. Unless there is change in selling price. Unless there is change in selling price. Unless there is change in selling price or variable cost. Or variable cost per unit. जब तक सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में बगावत नहीं आती, दिस रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद कंट्रीब्यूशन विद सेल्स विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट. क्लियर है गाइस? नाउ देयर इज वन मोर मेथड where we can calculate contribution to sales ratio. Contribution to sales ratio कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि सर अगर हमारा बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के पीछे फैक्टर क्या है? कंट्रीब्यूशन का. तो हम हाइलो मेथड को यूज करके भी सीएस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा. राइट गाइस? क्लियर है? So let's move on towards the next part, and the next part is how can we calculate profit? Profit. सर अभी तक हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट की इक्वेशन. सर प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट स्लैश लॉस. This one method जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे हर रोज, we were using this thing. We were using total revenue minus total cost. Minus total cost. Now we also have one more method to calculate the profit. And how do we calculate profit? Now we can calculate profit as total contribution minus fixed cost.
Now we have one more method to calculate the profit, and that is total contribution minus fixed cost. Total fixed cost minus total fixed cost. Got it, guys? This is another method of calculating the profit using the simple equation total contribution minus total fixed cost. कल तक हमने भी सिर्फ total revenue minus total cost के बारे में पढ़ा था. Now we have one more technique to calculate the profit, and that is what total contribution minus total fixed cost. Got it, guys? Next. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे, बट यू नीड टू कॉपी ऑल दीज थिंग्स. और जैसे जैसे मैं हम चीजें आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस आप लोगों को पास लिखी भी होनी चाहिए, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट थिंग्स. एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ बेसिक एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन. पहले हमने 4 एग्जांपल्स टोटल कॉस्ट, we have total cost and total revenue का concept हमने देखा था. Now we will be moving towards an example where we will be dealing with contribution, where we will be dealing with break even. All right, guys, let's start with the work. Let's start with an example. We have picked up an example for you. Right, guys? A basic example to understand the concept of contribution and how with the help of contribution we can calculate profit and loss at different activity level. So right now we are given with an example. A business makes a single product. Details are as follows. Selling price is $30 per unit. Each single unit require 2 kgs of raw material or direct material costing $5 per kg. That means अगर material की हम value देखेंगे तो 2 into 5, what is our material cost? It's $10. Then we have direct labor. Each single unit requires 3 hours of labor time and the labor is paid at $4 per hour.
So what is our labor cost per unit? It's $12. Variable production overheads are recovered at $2 per unit. That means this is also our one of the variable element of the cost. Then we have fixed production overheads of 60,000. This is our fixed cost. This is our fixed cost. Then we have variable sales overheads. Variable sales overhead is also our variable cost, which is $1 per unit. And then we have fixed sales overheads. Fixed sales overheads are also 40,000. This is another fixed cost, which is 40,000. Output level right now is 24,000 units. What is 1,000 units? Now, agar the first requirement is to calculate contribution, or we can say the first requirement is the variable cost per unit. So how can we calculate variable cost? So variable cost meant direct material is variable, direct labor is variable, variable production overhead is variable, variable sales overhead is variable. So if we total them, the total is 10 plus 12, 22. 22 plus 2 is 24 plus 1, that makes 25. So what is our variable cost per unit? Variable cost is also called the marginal cost. So our variable cost per unit is $25. So the first requirement, we have done with the first requirement to calculate the variable cost per unit. And sir, we have determined the variable cost per unit, and the variable cost per unit is $25. We can add an extra page as well. The first answer is 25. Variable cost per unit is 25. The second requirement is, sir, the second requirement is we need to calculate the contribution per unit. Now, guys, we know that what is our variable cost? Variable cost is 25, and what is our selling price? Selling price is $30 per unit. You see, the selling price is $30 per unit, and we know the variable cost per unit is 25. Therefore, we can calculate contribution per unit. So how do we calculate contribution per unit? Contribution per unit equals to selling price minus variable cost per unit. Make sure कि exams में you also write the formula. I'm also writing contribution per unit equals to selling price minus variable cost per unit. So what is our selling price? It's 30 minus variable cost is $25. So what is our contribution? Contribution per unit is $5. What is our contribution per unit? Contribution per unit is $5. Next. Next is calculate contribution to sales ratio. That means we need to calculate the profit volume ratio or contribution to sales ratio, guys. Now we need to calculate contribution to sales ratio. And how do we calculate contribution to sales ratio? This is contribution divided by selling price into 100. It's contribution divided by selling price divided by selling price into 100. We need to calculate the relationship between the two different elements. कि selling price और contribution में क्या relationship है? So what is our contribution per unit? So the contribution per unit is $5 divided by selling price is $30.
So what is our contribution to sales ratio? So the contribution to sales ratio is 1/6, or we can say percentage में लिखेंगे तो 16.67%, right? जहां पे आंसर डेसिमल्स में आ रहे हो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट, तो आप उसका आंसर फ्रैक्शन में भी लिखा करें. That means the relationship between selling price, and contribution is 1/6 or 16.67%. Next. The next requirement is that we need to calculate the break-even point in units and in value. We need to calculate the break-even point in units and value. So let's calculate the break-even point in units. Break-even point in units के लिए we need total fixed cost. थोड़ा सा हम fixed cost को alter करते हैं. Make fixed production cost to be 80,000. Fixed production cost is suppose 80,000. Right? So we have two different fixed cost. And what are our total fixed cost? Total fixed cost is 80,000 plus 40,000, that makes 120,000. राइट. वेरिएबल सेल्स ओवरहेड नहीं है फिक्स कॉस्ट. ठीक है गाइस, याद रखिएगा दो चीजें हैं फिक्स कॉस्ट के अंदर, दैट इज 80,000 एंड 40,000. Yes. Now we need to calculate what? We need to calculate, sir, the break-even point in units. तो break-even point in units and value के लिए सबसे पहले in units calculate करने के लिए क्या करेंगे? That is total fixed cost. Total fixed cost divided by contribution per unit. What is our total fixed cost? That is 120,000. And what is our fixed? And what is our contribution? Contribution is $5. That makes 24,000 units. So at 24,000 units, the business would neither be making profit nor loss. This is our break-even level of activity. और अगर हमें break even in value calculate करने के लिए दिया जाए, तो how do we calculate break even in value? Break even in value equals to break even in value equals to break even in units multiplied by selling price. Break even in units multiplied by selling price. And what is our break even in units? That is 24,000 units multiplied by selling price is $30. So 24,000 multiplied by 30, that makes 720,000. That is $720,000. तो जब ब्रेक इवन अराइज होगा उस वक्त हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों कितना होगा? इट्स गोइंग टू बी $720,000. It's going to be $720,000. Next requirement, break even point in units and value हो गया. नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिस्कस करेंगे.
बट यहाँ पर हम अपना टोटल आउटपुट चेंज कर देते हैं. सपोज द टोटल आउटपुट इज नॉट 24,000, it's 30,000. Suppose the total output level is 30,000 units. तो सर our total output level is 30,000. Margin of safety का मतलब क्या होता है? Margin of safety का मतलब होता है कि ब्रेक इवन अगर हमारे टोटल आउटपुट एंड ब्रेक इवन का जो डिस्टेंस है, इट्स कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हमारा टोटल आउटपुट 30,000 यूनिट्स का है और ब्रेक इवन के लिए वी नीड टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? वी नीड टू सेल 24,000 यूनिट्स. दैट मींस 6,000 यूनिट्स जो सरप्लस है, दैट्स कॉल्ड आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. So first of all, we'll discuss about the definition of margin of safety. How do we calculate margin of safety? Margin of safety is total output minus break-even level of output. Margin of safety in units equals to margin of safety in units equals to in units equals to total output minus break-even level of output. और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में ऑपरेट करती हैं, इसका मतलब उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में भी होता है, बट वी कॉल इट एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट. So what is our total output, guys? Our total output is 30,000 units. Total output is 30,000 units minus break-even level of output, and the break-even level of output is 24,000 units. The margin of safety in unit is equal to 6,000 units. That means break-even के beyond हम कितने extra units sell out कर रहे हैं? We are selling 6,000 extra units beyond the break-even level of output. Next is, तो गाइस जो पीछे हमने फॉर्मूला शीट डेवलप की थी जिसमें वी वर राइटिंग ऑल द थिंग्स, यहाँ पे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कॉन्सेप्ट ऐड अप कर सकते हैं. And margin of safety से related we have three important calculations. One is margin of safety in units, one is margin of safety in value, and other is margin of safety as a percentage of sales. Next is margin of safety in value. That is margin of safety in units multiplied by selling price. Multiplied by selling price. Next, margin of safety as a percentage. Margin of safety as a percentage of sales. अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू का एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट इज और total revenue minus break even in value. That is total revenue minus break even in value.
And margin of safety as a percentage of sales के लिए margin of safety divided by total sales into 100. अगर margin of safety units में लेंगे तो total sales भी units में. Margin of safety अगर value के अंदर है तो हमारे पास revenue या sales भी value में होगा. Margin of safety divided by total sales into 100. If you're using margin of safety in units, use sales in units. If you're using margin of safety in value, use sales revenue. दोनों केसेस में the answer is going to be same, but the answer is expressed in percentage. हमेशा हम इसको किस में express करते हैं? Percentage में. तो guys, इस particular example के अंदर examiner ने हमसे कहा था कि आपने calculate करना है margin of safety in units and in value. हमने in units calculate कर लिया है. अब हमें in value भी calculate करेंगे. And what you can do is कि you can actually finish this question from your own, right? इस question को आप खुद से complete कीजिएगा. And do one more thing. I'm giving you some of the questions from past papers. I'm giving you some of the questions from past papers. Kindly solve those questions. All right, guys. 28,000. तो ये example आपने complete करनी है. Right, kids? You need to solve this particular example. And we will be continuing in the next class regarding our continuity, but make sure कि मैं आप लोगों को homework दे रहा हूँ. I will be writing in the chat bar. मैं chat bar में mention कर दूंगा, right? And then before the next class, we will be having our question answer sessions, and then we will be moving towards the further concept. So guys, we have understood the concept relating to, let me increase the brightness. All right, kids, we have understood the concept relating to contribution and break-even. This is the simple concept. Make sure that you actually go through this concept again. I will be sending you the PDF files and we'll try to upload the lecture on the YouTube as well. But before the next class, make sure that you all come very well prepared. And let's move on. Guys, now you need to solve June 2007. You need to solve June 2007. Next is June 2003. Then you need to solve June 2011. Then you need to solve June 2009. June 2009. And सारे questions के अंदर एक चीज common है, that is paper 2 question 3. हर year का paper 2 question number 3. ये सारे years जो मैंने दिए हुए हैं, make sure that you solve all these questions. Right? So we will be continuing in the next class. And that is going to be possibly tomorrow. आपको timing भेजे हुए हैं. आप लोगों को मैं update कर दूंगा फिर भी if there is any change in the schedule. ख्याल रखिएगा अपना बेटा. Right? See you guys. See you.